No object is perfectly rigid or perfectly elastic or perfectly plastic. ये ध्यान में रखना। स्टूडेंट्स फिजिक्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम परफेक्टली रिजिड बोलो, परफेक्टली इलास्टिक बोलो या परफेक्टली प्लास्टिक बोलो। हाँ, तुम एग्जाम्पल दे सकते हो। A piece of stone, rigid body. A piece of iron, a rigid body we consider. A rubber ball we can consider as an elastic body. A table tennis का ball we can consider, we can deform it. अगर suppose TT ball है और उसके ऊपर bat hardly hit किया है तो what happens? It changes its shape completely. यानी वहाँ पे permanent deformation भी हो सकता है। तो based on to the internal restoring force students we can classify substances. तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए तुम्हें कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत है? We have to go for what kind of object? Rigid object. अगर किसी ने पूछा रिजिड ऑब्जेक्ट होता क्या है तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि रिजिड ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो अगर इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अगर उन बॉडी को अगर तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। क्या ये बॉडीज अपना शेप चेंज करेंगे? नहीं, अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते। सच बॉडीज आर कॉल्ड टू बी रिजिड बॉडी। अगर किसी ने पूछा व्हाट एग्जैक्टली परफेक्टली रिजिड बॉडी, अ परफेक्टली रिजिड बॉडी जहां पे ओके अगर किसी ने बोला कि परफेक्टली रिजिड बॉडी अगर मैं बात करूं व्हाट एग्जैक्टली अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए स्टूडेंट्स इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी इनफाइनाइट। यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे इनफाइनाइट दे दिया। अब देखो अगर रिस्टोरिंग फोर्स इंफिनिटी पे है, इनफाइनाइट है रिस्टोरिंग फोर्स, उसका मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स इज आल्सो वेरी इनफाइनाइट। तो सच बॉडीज कैन नॉट डिफॉर्म होंगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। यानी there is no object on planet Earth in physics can be considered to be perfectly rigid, perfectly elastic, perfectly plastic. You can just set examples of it. क्या ये क्लियर हुआ सबसे पहले? So this is okay. Now when we go with respect to your next concept students, next concept is speaking about is यानी हम अभी rigid bodies के बारे के हिसाब से बात करेंगे। थ्रू आउट जो भी एक्सप्लेनेशन होगा ना स्टूडेंट्स वो पूरा rigid के हिसाब से ही होगा। I get it, जहाँ पे all the atoms and molecules we can consider as closely and compactly placed. Now we go for the next concept we consider is what exactly you mean by the term COM and CG. COM is students center of mass and CG is center of gravity. Now कोई बता सकते हैं what is center of mass and what is center of gravity students? Students can you tell me what is center of mass and center of gravity students? Center of mass क्या होता है? Center of gravity क्या होता है? Anyone? Since center of mass is a point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. A point where the entire mass of body is supposed to be concentrated. Center of mass, just listen to this, center of mass is a point where the entire mass of a body, अभी कौन सी बॉडी के बारे में बात कर रहे हो हम? रिजिड बॉडी, अभी मैं यहाँ पे रिजिड नहीं लिखता हूँ मैं, लेकिन बट ऑफ कोर्स वी आर स्पीकिंग अबाउट रिजिड बॉडी। Entire mass of a body is supposed to be concentrated.
यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान पे रखना. सपोज इफ आई से दैट उस बॉडी के अंदर, स्टूडेंट्स, इफ यू गो फॉर इट, सपोज इफ आई गिव यू अ बॉडी. Now, for this particular body, can I say it's a rigid body? So can I say there are lots of constituent particles inside it? Please pay attention, students. These are all constituent particles. Now, for example, you can consider a skew ball. Hope you know what exactly a skew ball is, students. Snooker ball. Billiards का game खेलते हो? Are you getting it with a rod? वो वाला ball में ले रहा हूँ. Now, suppose अगर ये ball motion में है. Suppose if I say the object is initially at point A, the object is reaching at point B. है ना, यानी ये मोशन में आ गया. तो मोशन में किसकी वजह से आया? चेंज इन पोजीशन किसकी वजह से आया? ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. तो यहाँ पे जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो एक्चुअली किसको जा रहा है? Students, the force is applied to this particular constituent particle. Force is applied to this constituent particle. Look at the forces are applied. Forces are applied to all the constituent particles. All the constituent particles. जब भी ध्यान से सुनना, जब भी सारे constituent particles एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो can I say the entire system is set to move in one direction. अगर सपोज ये जितने भी फोर्सेस है, छोटे छोटे फोर्स है, ये छोटे छोटे फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया है? हर एक कंस्टेंट पार्टिकल्स. इनका अगर मैं ऐड कर दूं तो ये नेट फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? सर ये नेट फोर्स इसी स्फेरिकल बॉडी का, इसी नेट फोर्स ये स्फेरिकल बॉडी का, it's applied at the point of intersection of the diameter. तो ये जो पॉइंट है वो बन जाएगा COM. यानी यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है, this is the force which is applied onto the body. Where exactly the force is actually directed towards the center of the mass and the body is set into motion. Yani, can I distribute this F? Can I distribute this F applied as force acting on each particle? Why not? First particle plus second particle plus third particle plus nth particle. Yes, I can go for a number of particles. What is this force applied will be? The answer is, what is this force applied will be? So it's a summation of all the forces. The answer is a summation of all the forces. So can I say how the particles are? So the particles are in continuous manner. Students, यहाँ पे देखो पार्टिकल सारे continuous manner है, rigid body है, सारे closely है, discrete manner में नहीं है, rigid manner में है. तो यहाँ पे net force को तुम क्या बता सकते हो? The net force applied on the body at center of mass, can I say is simply equal to integration of dm into a. ये क्या है? Net acceleration. ये क्या हुआ? Mass of each small particle. अगर मैंने F1, F2, F3 लिया तो कैसे? This is mass of first particle into acceleration of that. Students, क्या मैं यहाँ पे F1, ध्यान से सुनना, क्या पे यहाँ पे मैं F1 को M1 A1 लिखूंगा? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. F2 को M2 A2 लिखूंगा या F1 को M1 A लिखूंगा, F2 को M2 A लिखूंगा, F3 को M3 A लिखूंगा, Fn को Mn A लिखूंगा. Should I run an A1, A2, A3 या should I run only A? सर ये सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. भले मास ऑफ ईच कंस्टेंट पार्टिकल्स आर टेकिंग एज m1 m2 m3 mn. ऑफ कोर्स अश्मिता, ये सारे पार्टिकल्स एक ही एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे. एक सिंपल एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स. अगर सपोज मैंने तुम्हें एक ट्रेन दे दी स्टूडेंट्स, एक लगेज ट्रेन दे दी. ओके, एक ट्रेन दे दी. अभी ट्रेन के अंदर कितने सारे कंपार्टमेंट्स है? कितने सारे कंपार्टमेंट्स है? अगर सपोज मैंने बोला कि ये व्हील जा रहा है विथ 20 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, तो क्या दूसरा व्हील का वेलोसिटी अलग होगा? क्या ये बोगी का वेलोसिटी अलग होगा? हाँ स्टूडेंट्स, तो ये ईच कांस्टेंट पार्टिकल हुआ ना. ये बोगी एक पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, जैसे m1 m2 m3. लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है will entirely move with same. I get it. So each of them will have same velocity, each of them will have same acceleration.
So the entire acceleration possessed by the body can be considered equal to the acceleration of each particle. So simply we can write an integration of dm into a, where your m is your first particle, dmi, where I equal to 1, yeah, I equal to m. Yeah, integration of dm can be written as m into a. Or I can write on a simple integration of mi a, where I equal to 1 to I equal to n. लेकिन यहाँ पे हम I के हिसाब से नहीं जाएंगे क्योंकि ये continuous manner में, तो I can simply write an integration of dm, and integration of dm is m into a. So students, what is center of mass? Center of mass is a point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. That is one point you have to take care of it. उसके बाद में और तुम ऐड कर सकते हो such that forces acting. Please students, do take care of this. Such that forces acting on each constituent particle is considered to be directly applied at the center of mass of the body. Yani forces acting on each constituent particle is certainly applied at only one point. And what is that one point? What is that one point? That one point is simply called the center of mass of the body. तो ये हुआ तुम्हारा center of mass. So center of mass is a geometrical center. अब यहाँ पे तो ये कौन सा body है? It's a sphere. It's a sphere. It's a rigid sphere. It's a symmetrical body, students. अगर मैं कोई sphere दे दूँ तो उसका center of mass क्या होगा? तुम बोलोगे सर उसके axis कहाँ पे cut हो रहा है? So vertical or horizontally, any intersection of diameter, and that is called as the center of mass we consider. Is center of mass clear to all of you? Students, is the concept of center of mass clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये तुम्हारा center of mass का concept है, students. यानी सारे particles are closely and compactly placed. ये ध्यान में रखना. और जो forces constituent particles को apply किया है, हम assume कर सकते हैं they are acting at one point we consider. अगर ध्यान से देखना, ये सारे particles कैसे continuous manner में, इसलिए मैंने integration of dm into a लिया. Agreed? लेकिन कहाँ पे तुम्हें पता चले कि कहाँ पे थोड़े से particles scattered भी हैं. Students, अगर particles discrete manner में भी हुआ, discrete manner में होगा तो क्या होगा? What exactly net force को तुम कैसे दोगे? So net force को हम क्या देंगे? Net force को हम algebraic sum में भी लिख सकते हैं. ये किसके लिए है? ये mass is in continuous manner. I getting it? The mass is distributed in continuous manner. यहाँ पे MI where I equal to first particle to I equal to n particle. When distribution of mass is in discrete manner. और स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूं डिस्क्रीट मैनर का मतलब क्या, कंटिन्यूस मैनर का मतलब क्या. So now when you look into it, the mass is distributed throughout and the mass is distributed we consider in discrete manner we consider. Now for example, ध्यान से सुना, everybody listen carefully students. एक simple gesture में देना students. सोचो कि मैंने एक रॉड लिया. How to understand this students? मैंने एक रॉड लिया, यूनिफॉर्म रॉड. You getting it? यूनिफॉर्म रॉड लिया स्टूडेंट्स, जिसका यूनिफॉर्म मास रॉड, जिसका लेंथ L है. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो बोलोगे सर लेंथ L है ना. सेंटर ऑफ मास आपने बोला था जहाँ पे एंटायर मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. तो अगर मैं बोलूँ तो सर ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, और वो कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा. यानी वेरी एक्जैक्टली सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम ईच. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Center of mass for this particular thin uniform rod is at a distance L/2. अगर suppose now same rod मैंने लिया स्टूडेंट, सेम रॉड लिया और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है.
You getting it? Now this is the heavier mass and this is a smaller mass. तो मुझे बताओ where exactly center of mass will be for the system? Students, where is the center of mass of the system? If I take only for the rod is over here at the geometrical center. यहाँ पे lighter mass दिया है, यहाँ पे heavier mass दिया है. तो बता सकते हो where exactly the center of mass will be? Slightly on the heavier side. Yeah, slightly on the heavier side. यानी students ये समझने के लिए you have to go for center of gravity का concept. Students तुम center of mass को locate कर सकते हो. अब मुझे बताओ क्या ये दोनों particles ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों particles are arranged in discrete manner or in continuous manner? तो बोले से दोनों particles तो very well far away from each other है. सर ये दोनों तो far away from each other है. I getting it? इनके बीच में इसका ये छोटा मास है, उसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है. दोनों के बीच में अगर मैं सेपरेशन d ले लूं तो where exactly is the center of mass for this particular system? और अगर सपोज मैं अभी रॉड को पकड़ूं भी स्टूडेंट्स तो मैंने रॉड यूनिफॉर्म मास ले लिया है तो अज्यूम कि ये मेरा मास ये जो रॉड है वो मासलेस है. स्टूडेंट्स अगर मैंने ये मास यूनिफॉर्म रखा हुआ है थ्रू आउट तो अज्यूम दैट आई एम नॉट टेकिंग दिस रॉड एट ऑल इनटू कंसीडरेशन. तभी जाके स्टूडेंट्स जब भी तुम ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे ना तो वहां पे वो बोलेंगे फॉर अ मासलेस रॉड अज्यूम दैट द रॉड इज मासलेस. यानी तुम्हारा कंसंट्रेशन ये दो ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, एक छोटा वाला ऑब्जेक्ट और एक बड़ा वाला ऑब्जेक्ट. इसका मास स्मॉल m दिया हुआ है और इसका मास कैपिटल M दिया हुआ है. ना अगर मैंने पूछा हाउ डू यू लोकेट द सेंटर ऑफ मास, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है d है, तो हाउ डू यू लोकेट सेंटर ऑफ मास? तो मुझे बताओ ये कितने पार्टिकल्स हैं? Are there n number of particles together? No, they are just two particles. So are they in continuous manner? Are they in continuous manner or they are in discrete manner? So they are in discrete manner. How to locate the position of center of mass? Students, ध्यान से सुनना. The position of center of mass. Let us say the position of center of mass is small r. Students, the position of center of mass, students, do keep in mind, is inversely proportional. That means the distance of the center of mass. We can put forward more precisely. The distance of the center of mass for a system of objects we consider, I get it, is inversely proportional to any of the particle. That means it's inversely proportional to mass of any particle we consider. अगर ये छोटा वाला m मैंने दिया है तो r1 is inversely proportional to m1. अगर मैंने r2 दिया है दूसरे के लिए तो r2 is inversely proportional to small m दिया है, ये कैपिटल m मैंने ले लिया. Now, if I want to write down the relation, what exactly, when I remove the symbol of proportionality, I'm going to get a constant. दोनों केस में constant same ही है. So now see, what is the formula I'm getting it? So R1 small m is equal to R2 capital M. Is this clear, students? Is this clear? Now can I find out the position of center of mass? Students, now can I find out the position of center of mass? वापस बोल रहा हूँ, मैंने कौन सा बॉडी दिया था पहले? एक स्ट्रेट रॉड दिया था स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था. तो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? इट वाज इजी फॉर मी टू लोकेट. हेलो स्टूडेंट्स, इट्स इजी फॉर मी टू लोकेट मिड पार्ट ऑफ द रॉड. चलो मैं ये रॉड को निकाल लेता हूँ. मैं स्टूडेंट्स, मैं रॉड को निकाल देता हूँ. मैंने तुम्हें एक स्क्वायर लैमिना दिया स्टूडेंट्स, एक मेटल का प्लेट दिया है. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. एक मेटल प्लेट दिया है, रिजिड मेटल प्लेट, यूनिफॉर्म मास प्लेट एंड स्क्वायर प्लेट दिया है. तो मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट करोगे? तो तुरंत तुम बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल वो हो जाएगा क्योंकि मास यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन यहाँ पे मैंने दो मासेस दिए हैं. इज द मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड? नो. ये कौन से मैनर में? डिस्क्रीट मैनर में. यहाँ पे स्मॉल है, मैं यहाँ पे कैपिटल है. मैं मुझे लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास.
So let us say that the position of center of mass will, let us say it's R. So that is always inversely proportional to mass of each of the particle. यानी अगर मैंने center of mass with respect to small m लिया तो मैंने R1 लिया है, तो it's inversely proportional to small m. अगर मैंने a capital M लिया तो R2 is inversely proportional to capital M. Now can I get an answer for this? Why not? Why not? What kind of maths you'll be using it over here? Can you tell me, students? What kind of maths you'll be using it over here? को बता सकता है? I want to locate the position of center of mass. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिजिक्स नहीं अभी मैथ्स है, तो क्या मैथ्स यूज करोगे? सर सिंपल, आपने एडवांस स्मॉल एम लिया है, R2 स्मॉल एम लिया, तो सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, और ये प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होगा अभी, ये फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं. स्टूडेंट्स ध्यान दो कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स दिया है तो R1 बाय R2, सर ये तो हो जाएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m. आपने पूछा है सेंटर ऑफ मास, यानी सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप स्मॉल m के हिसाब से भी निकाल सकते हो, कैपिटल M के हिसाब से भी निकाल सकते हो, क्यों नहीं? हाँ, वो बात सही है कि कैपिटल M का मास थोड़ा सा हैवी है, तो शायद सेंटर ऑफ मास उस तरफ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? अगर मैंने दोनों मास सेम दिया होता तो सेंटर ऑफ मास विल बी द सेंटर. लेकिन यहाँ पे इसका मास थोड़ा सा हैवी है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, तो R1 by R2 is equal to capital M by small m. Now suppose if I happen to go for componendo, so can I say R1 plus R2 upon R2 is equal to capital M plus small m upon small m. आ गया तुम्हारा आंसर. मुझे क्या चाहिए था? सेंटर ऑफ मास. What is the distance of the center of mass from the heavier mass? Can I make R2 as my subject? Can I take my R2 as my subject? Yes. What exactly the formula for R2 will be? So the formula for R2 will be equal to how much? ये R1 plus R2 क्या बन गया? D into small m upon what? Capital M plus small m. Did you get the position of R2? देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है? R1 plus R2 क्या है? मिला के स्मॉल d हो जाएगा, तो मैंने इसको d लिख दिया. मुझे R2 फाइंड आउट करना है, यानी ये R2 क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हेवियर मास. क्या मैं R1 में निकाल सकता था? क्यों नहीं निकाल सकते हो तुम यहाँ पे भी. इसको इन्वर्टेंडो कर दो और फिर इसको कंपोनेंडो कर दो, दोनों केस में तुम्हारा आंसर सेम ही आता. लेकिन एक का डिस्टेंस कहां से होता? फ्रॉम द हेवियर मास, और दूसरे का फ्रॉम स्मॉलर मास. सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? R2 is equal to what? So D is the distance between the two masses, small m is the mass of small one, capital M plus small m. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? Students, is this clear? Yes. Yes, sir. I'm writing this formula still properly over here again. ये सिर्फ formula मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे again. But first again I'll just try to put forward the concept of system of particles. Precisely we are going to go for rigid bodies we consider. That is all based on the internal restoring force, which depends on the interatomic force of attraction. The interatomic force of attraction is maximum in solids. That is, such bodies are called to be rigid bodies we consider. As applied force increases, applied force increases, restoring force also will increase. They are both equal in magnitude and opposite in direction. For what kind of bodies we call for? Rigid bodies. That's why rigid body does not undergo deformation. अगर किसी ने बोला कि why rigid body deform नहीं होता, तो ये तुम्हारा आंसर है. लेकिन क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है फिजिक्स में जो परफेक्टली रिजिड है? परफेक्टली रिजिड हो गया तो उसका मतलब इंटरनल स्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. हो नहीं सकता है. वो भी बॉडी डिफॉर्म हो सकता है, लेकिन हम एग्जांपल लेते तो हम वी सी अबाउट रिजिड बॉडी, यानी अज्यूम करते कि बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रहा है. Now to understand further, and for such objects we go for center of mass and center of gravity. Center of mass का definition क्या है? A point where the entire mass of the body is supposed to be concentrated. The forces applied onto each constant particles is actually the force applied where? At a point, and that point is called as a center of mass. So अगर masses are in continuous manner we consider, so it's integration of dm into it. अगर mass are in discrete manner, then algebraic sum of mi, ये a constant होगा.
ये तो कांस्टेंट रहेगा, ei नहीं आएगा, mi आएगा, पर i equal to 1 तो i equal to n when distribution of mass is in discrete manner. और ये किसके लिए? Continuous manner. If I give you a rigid lamina and if it's a uniform body, it's a geometrical center. लेकिन अगर मैंने दो मास दिया है, तो how do you go about? Can I erase only this part? इस part को erase कर दो स्टूडेंट्स, नीचे वाला. Yes, sir. So I'm just trying to put forward the formula now, okay? To get the center of mass, students, this is m1 and this is m2. हमें नहीं पता कि कौन ग्रेटर है कौन है, और इसका जो डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है सेंटर से लेना तुम्हें, और ये स्मॉल डी आ गया, ओके. द पोजीशन, ओके, position of COM is inversely proportional, okay, from any one particle is inversely proportional to mass. Are you getting it? Position center of mass from a given particle is inversely proportional to mass of that particle. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, उसी पार्टिकल के हिसाब से हमें जाना है, ये रिलेशन याद में रखना. R. So now if I say, can I say R1 is inversely proportional to M1, R2 is inversely proportional to M2. Therefore, R1 M1 is equal to R2 M2. Now I can go for two different ways. एक way I can go for R1 by R2, that is equal to M2 by M1. अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लेता तो R1 plus R2 upon R2 is equal to M2 plus M1 upon M1. What is R1 plus R2? Is small d, distance between the two, upon R2 is equal to M2 plus M1 upon M1. So now what exactly the answer for R2? I'll get it. R2 will be equal to what? R2 will be equal to small d into bracket M1 upon M1 plus M2. ये क्या हुआ? Position of center of mass. कौन से particles है? It's from M2. अभी देखो, ध्यान से देखो, क्या डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तुम्हारा? हाँ सही, डिनोमिनेटर बढ़ गया है. Of course, this value will be smaller. And it is from where? From M2. तो ये यहाँ पे आ जाएगा. अगर सपोज मैं R1 का फॉर्मूला लेता हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली R1 का फॉर्मूला क्या होगा? सिमिलरली R1 का फॉर्मूला क्या होगा? सर D तो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे M1 की जगह पे क्या होगा? सर D into M2 होगा. एग्रीड. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? सर डिनोमिनेटर में M1 plus M2. आर यू गेटिंग इट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी सिंगिंग. अभी देखो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है. हाउ टू अंडरस्टैंड? दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, यानी तुम्हारा पोजीशन अभी डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होगा. तुम्हारा पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? सर ये भी कांस्टेंट है, ये m1 प्लस m2 भी डिनोमिनेटर में सेम है, यानी तुम्हारा r2 किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्रिसाइजली m1 के ऊपर डिपेंड होगा. और ये r1 किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, कभी कभार तुम्हें प्रॉब्लम्स डायरेक्टली मिल सकते हैं. m2 समझ में आ रहा है? यानी m2 ज्यादा है तो r1 विल बी, सी द पोजीशन ऑफ r1 किससे है? व्हाट इज पोजीशन ऑफ r1? r1 किससे? m1 से या m2 से? सर r1 इज फ्रॉम m1. Hello students, R1 is a position from M1. Is M2 greater? Yes. तो R1 का डिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये ध्यान में रखना, और ये डिस्टेंस कम है. Are you getting it students? And this becomes a position of center of mass.
अभी देखो इसकी कंडीशंस मुझे बता सकते हो फ्रेंड्स, इसके कंडीशन मुझे बता सकते हो? चलो दोनों ऑब्जेक्ट्स मैंने दे दिए तुम्हें, इसकी कंडीशन तुम बता सकते हो? अगर सपोज मैंने तुम्हें रिलेशन दे दिया स्टूडेंट्स, ये रिलेशन तुम्हारे सामने है, ये रिलेशन में वापस लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ओके, इट्स m2 by m1 agreed is equal to what r1 by r2, ओके स्टूडेंट्स। यही कंडीशन को लेते हुए मेरी 3 कंडीशंस मैं तुम्हें देता हूँ स्टूडेंट्स, 3 कंडीशंस, ओके, ये फॉर्मूलाज के हिसाब से जा रहा है स्टूडेंट्स। अगर मैंने बोला इफ पहला कंडीशन r1 is equal to r2, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? दूसरा कंडीशन if r1 is greater than r2, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? एंड इफ r1 is less than r2, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बता सकते हो अभी? हाँ स्टूडेंट्स, अभी बता सकते हो 3 कंडीशंस? फ्रेंड्स अगर r1 r2 ये हुआ तो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? मिडवे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैंने लिया, मिडवे हुआ, मिडवे हुआ उसका मतलब क्या हुआ? यस, मिडवे हुआ उसका मतलब क्या हुआ? द टू मासेस आर सेम। समझ में आ रहा है? देखो ना, r1 इज इक्वल टू r2, तो रेशियो 1:1 आ गया ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। ओ यानी दो ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा और वो डिस्क्रीट है। अभी भी मैं डिस्क्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं डिस्क्रीट मासेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ ओनली 2 पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी ध्यान में रखना, कंटिन्यूअस मैनर में तो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे तुम्हारे डिस्क्रीट मैनर में आ गया। तो अगर मैंने r1 इक्वल टू r2 लिया तो दोनों का मास सेम है स्टूडेंट, तो m2 by m1 इज इक्वल टू 1:1, तो दोनों का मास सेम होगा। अगर मैंने r1 इज ग्रेटर देन r2 लिया तो किसका मास ग्रेटर होगा? सर m2 का मास ग्रेटर होगा, यहाँ पे m2 विल बी ग्रेटर देन m1। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा? यस, क्लोजर टू m2। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास इज नियरर m2, एग्रीड? तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे m2 is equal to m1, यहाँ पे r1 is less than r2, so what exactly we consider as? तुम क्या बोलोगे? ध्यान से देखना, r1 is less than r2, so what about m2? So m2 is less than m1, so where is the position of center of mass students? So COM is nearer to m2 or m1? m1। क्या ये क्लियर हुआ तीनों? Yes, sir. So we are trying to simply find out position of center of mass students, okay, for a system of 2 particles. तो ये जब भी तुम लिखोगे center of mass, यहाँ पे इसको heading लिखना, center of mass for a system of 2 particles students. If you are writing it down, if you are noting it down, please put down center of mass for a system of 2 particles. Okay, and how do we, क्योंकि बहुत books के अंदर formula directly दिया हुआ है, how to locate it, but you keep in mind that the position of center of mass from a given particle is inversely proportional to the mass of that particle we consider. Taking that into account, तुम्हारा ये mathematical relation है. Now, if somebody asks you, students, can you tell me what are the factors? What are the factors on center of mass depends? So तुम बोलता सकते हो factors किसके ऊपर है? ये देखो, ये तुम्हारा factor center of mass देखो ना, change हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके ऊपर depend है? तो तुरंत बोलेगा sir, it depends on the distribution of mass. Friends, it depends on the distribution of mass. It also depends on the shape of the body. यानी students, अगर किसी ने पूछा what are the factors on which center of mass of a body depends on to the center of mass of a system depends on to what? 2 factors. ये ध्यान में रखना students, 2 factors. ये factors भी चाहो तो लिख लेना. It depends on the shape of the body. These are the factors. It depends on the shape of the body, students. And the next one, it depends on to what? Distribution of mass of a given body. Okay, and the distribution of its constituent particles. Distribution of mass of given body. These are the 2 factors.
Can I erase the students now? Students, can I erase this completely now? Okay, the next part now, students. Let me speak about, this is for system of two particles, okay? Now I'll be going for, before going for, see, तुम्हारे cases हैं यहाँ पे, center of mass for a system of two particles, then center of mass for number of particles, okay? तो कुछ number of particles दिया है, then center of mass for a rigid lamina, वैसे दिया है, तीन चीजों के लिए. लेकिन now before going for the other two, I'll just give a small gesture of center of gravity. फिर हम वापस सेंटर ऑफ मास में आएगा. अभी तुम्हारा पूरा एक्सप्लेनेशन होगा स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास. So center of gravity क्या है? Center of mass is the entire mass of a body is supposed to be concentrated. And students, where exactly center of gravity? So center of gravity को locate करने के लिए, it is a point. Okay.
which can lie inside or outside the matter. तो मुझे बताओ, जब भी मैंने ये पॉइंट लिखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट व्हिच कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड द मैटर, तो सेंटर ऑफ मास का जब भी मैंने बताया था और मैंने दो मासेस लिया था m1 एंड m2, तो वेरी एक्जैक्टली सेंटर ऑफ मास वाज आल्सो लाइंग। ये तो सिर्फ डिस्टेंस ज्वाइन कर दिया मैंने, ये रॉड नहीं है, ये डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, वाज द सेंटर ऑफ मास वाज लाइंग इनसाइड m1, वाज इट लाइंग इनसाइड, सो नो, इट वाज आउटसाइड द मैटर। यानी स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास फॉर अ गिवन मास, ध्यान से सुनना, फॉर अ गिवन मास, everybody think carefully, for a given mass, can it lie inside the matter? Yes. So देखो ना, मैंने ये अगर लैमिना दिया तो yes, it lies inside the matter. ये एक स्क्वायर लैमिना दिया, everybody listen carefully please students, ये पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, inside and outside, तो यहाँ पे भी वो होल्ड ट्रू करता है, it holds true over here also. अगर मैंने स्क्वायर लैमिना दिया तो can it say that center of mass lie inside? Yes, it lies inside. Absolutely correct. But now suppose if I happen to consider M1, M2, does it lie inside the matter? No, it lies outside the matter. And closer to M2 we can consider, why not? वही अगर सपोज यही स्क्वायर लैमिना, ध्यान से देखना, यही स्क्वायर लैमिना को प्लीज पे अटेंशन, अगर मैंने यहाँ पे हेवीनेस ज्यादा दे दिया, ये पूरा स्क्वायर लैमिना, ये पूरा स्क्वायर लैमिना, लेकिन मैंने ये पार्ट ज्यादा ले लिया और ये पार्ट कम ले लिया। स्क्वायर लैमिना में से ये पार्ट को निकाल दिया, ये पार्ट बचा है, तो हुआ क्या है, तो बोले सर पहले तो पूरा स्क्वायर था, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर था, अभी ये तो वेकेंट हुआ, ये तो काट दिया आपने, ये कट पार्ट है, तो ये तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट होगा, है ना। तो ऑफ कोर्स जहां पे हेवीनेस आएगा, सेंटर ऑफ मास माइट शिफ्ट ओवर देयर। यानी पहले था, अगर सपोज मैंने एल दिया है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एल दिया है तो सेंटर ऑफ मास सर L/2 L/2, x, y क्या होगा, L/2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे L/2 नेसेसरी होगा? नहीं होगा, यानी थोड़ा सा शिफ्ट होगा, it might shift somewhere over here, and that is what we are trying to locate it. इसलिए मैंने फॉर्मूला दिया है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। In case of center of gravity is a point which can lie inside or outside the matter, whatever the position of body is. This point is where, ध्यान से सुनना, where algebraic sum of net force acting on the particle will be equal to 0, या algebraic sum of net torque about the point, यहाँ पे भी क्या है, about the point is equal to 0। यानी जहां पे algebraic sum of net force acting about that point is equal to 0, the point is called center of gravity. When algebraic sum of total moment of force, इसको हम क्या बोलेंगे, algebraic sum of total moment of force is equal to 0, that point is considered to be center of gravity. और हम ये किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स? वी आर ट्राइंग टू गो फॉर व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट्स, वी आर ट्राइंग टू गो फॉर रोटेशनल मोशन। तो प्रिसाइजली स्पीकिंग, शुड आई गो फॉर
फोर्स ट्रांसलेशनल, ये कौन सा मोशन के लिए हो जाएगा? ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं एफ के बारे में बात कर रहा हूं तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ये किसके लिए होगा? ये होगा रोटेशनल मोशन के लिए। So what exactly is center of gravity? It is a point which can lie inside or outside the matter, whatever the position of the body is. And this point is where the algebraic sum of net force acting on the body is equal to 0, or the net torque acting on the body is equal to 0. So can I say this point is nothing but point where, ध्यान से सुनना, where entire weight of body is concentrated. हाँ स्टूडेंट्स, यानी जब भी तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से जाओगे तो वहां पे तुम क्या बोलोगे? एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और सेंटर ऑफ मास के लिए क्या बोलोगे? वेयर एंटायर मास ऑफ अ बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर मैंने एक रॉड लिया स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अगर मैंने एक रॉड लिया जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आया? तो मैंने बोला L/2 पे आया। लेकिन वही अगर मैंने रॉड यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स, तो मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 पे ही होगा। हेलो, L/2 पे होगा। लेकिन ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जहां पे पूरे रॉड का वेट कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पे उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मैंने बोला वेट कॉन्सेंट्रेटेड, तो कैन आई से ये पूरा रॉड को मैंने एक नाइफ एज पे रख दिया, देखो सीसॉ के जैसे रख दिया। यानी जब भी तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करोगे तो देखो, I can suspend it in this manner. I can suspend this particular part. The pen is kept horizontally, students. I can keep the pen horizontal. And where exactly I've kept the pen? I've kept the pen in such a manner that it's not rotating about a given point. And the entire weight is concentrated over here. ये जो पॉइंट है वो क्या बन गया? ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया। और ये क्या पॉइंट है? ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हें सिर्फ ये बताना है सेंटर ऑफ मास विद द एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। दूसरा पॉइंट, डज इट लाइज इनसाइड द मैटर और आउटसाइड द मैटर? ईदर, इट कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड द मैटर। Where do you find out the center of mass or center of gravity more precisely? Shift towards a heavier mass. लेकिन for a given body, center of gravity will always shift. Center of mass is still precisely considered as a geometrical center for a given body. Center of mass is simply considered is a point, is a geometrical center of that particular point. अगर मुझे ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से डिस्क्राइब करना है तो वहां पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। अगर मुझे रोटेशनल मोशन को समझना है तो द नेट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, ये देखो ना यहाँ पे टॉर्क नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? ये रॉड ना ही क्लॉकवाइज जा रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो ना, ये रॉड पूरा हॉरिजॉन्टल है, ना ही वो क्लॉकवाइज जा रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो समेशन ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग अबाउट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड center of gravity. But does it lie into the matter? Yes, it lies into the matter we consider. और सपोज इसी रॉड को, इसी रॉड को अगर सपोज मैंने वायर में कन्वर्ट कर दिया, इसी रॉड को स्टूडेंट्स इफ आई हैव टू कंसीडर इन फॉर्म ऑफ वायर, देखो क्या बन गया ये, तो ये तो रिंग बन गया। तो कैन आई से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास इज आल्सो ज्योमेट्रिकल सेंटर। But does it lie inside the matter or it lies outside the matter? For a uniform ring, since for a uniform ring, mass is distributed on the circumference. Where exactly it's lying? Inside? No, it's lying outside the matter. Hollow space, students. Uniform ring का मतलब hollow space में है, hollow है। अगर सपोज मैंने बूमरैंग दिया स्टूडेंट्स, have you seen a boomerang? ऐसे बूमरैंग आता है, ये बूमरैंग है। अगर तुम फेंकोगे तो पूरा घूम के तुम्हारे हाथ में वापस आएगा। तो मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा?
तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज अगर मैंने एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पे पॉइंट बी लिया, यहाँ पे पॉइंट सी लिया, तो अज्यूम करो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये इसका एक्सिस मैं अज्यूम करता हूँ, ये इसका एक्सिस, ये सारे एक्सिस कहाँ पर मीट हो रहा है, इट्स मीटिंग आउटसाइड, सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. डज इट लाई इनसाइड द मैटर और आउटसाइड द मैटर? आउटसाइड द मैटर. अगर कोई इंसान सीधा खड़ा है, स्टूडेंट्स, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, so where exactly center of gravity? So center of gravity is from the navel point and directed always between the 2 feet. Force is always, it's the force, it's a weight. तो ये तुम्हारा center of gravity है. Does it lie between the 2 feet? Yes. The force is directed between the 2 feet. And the center of gravity is lying inside the matter we consider. लेकिन can center of gravity, the force can be shifted? Why not? अभी ध्यान से सुनना, ये बंदा सीधा खड़ा है. Now suppose अगर मैंने इसी इंसान को मैंने माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करवाया, स्टूडेंट्स, जब भी तुम माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते हो स्टूडेंट्स, तो डू यू लीन फॉरवर्ड और लीन बैकवर्ड? हाँ स्टूडेंट्स, जब भी तुम स्लोप या माउंटेन के ऊपर जाओगे तो बंदा क्या करेगा सर? बंदा लीन करेगा ना, आगे की तरफ लीन करेगा. आया ना? अभी देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उसका सेंटर ऑफ मास वही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है, लेकिन देखो लाइन जॉइनिंग, यहाँ पे लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ फॉल्स विद इन द फीट. Students, right now you stand up and watch the screen. खड़े हुए देखो, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो फोर्स जा रहा है वो सीधा दो टांगों के बीच से सीधा अर्थ की तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ. लेकिन वो जब तुम चढ़ान चढ़ते हो तो लोगों भैया, वेर एग्जैक्टली दिस फोर्सेस, तो ये जो फोर्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखो आगे की तरफ आ गया. अगर बाय चांस ये पर्सन परपेंडिकुलर चढ़ता है या पीछे की तरफ, तो टॉपल हो जाएगा, गिर जाएगा. यानी कौन सा फोर्स इस बॉडी को होल्ड करके रख रहा है सर? ये फोर्स. और ये फोर्स कहाँ की तरफ एक्ट हो रहा है? इज इट फॉलिंग बिटवीन द 2 फीट और इट्स फॉलिंग अहेड ऑफ 2 फीट? जस्ट अहेड ऑफ 2 फीट. अगर ये फोर्स पीछे आता तो बंदा गिर जाता. दैट इज वाई स्टूडेंट्स, जब भी हम माउंटेन को क्लाइंब करते तो हम आगे की तरफ लीन करते हैं. अगर वही बंदा अगर माउंटेन को नीचे की तरफ आता होगा, सपोज अगर तुम नीचे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर बंदा नीचे की तरफ आता है तो आगे लीन नहीं करेगा, वो पीछे की तरफ लीन करेगा. दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लीन. तो देखो यहाँ पे भी देखो, ये जो फोर्स है इसको होल्ड करके रख रहा है for a body moving in the downward direction. So can I say center of gravity is a point where the entire weight of a body is supposed to be concentrated? Yes, it's an entire weight of the body supposed to be concentrated. अगर translation motion के बारे में बताना है तो वो point कौन सा है जहाँ पे summation of all the force acting on the body is 0. अगर rotation motion को describe करना है तो summation of net torque acting about that point is equal to 0. Is that point lying inside the body? Yes, it can lie inside the matter or it can lie outside the matter we consider. The line joining that point, will always fall where? Towards the center of the earth, always towards the center of the earth. So ye center of gravity, and if I go ahead, where exactly is going towards the center of the earth? Center of the earth, towards the center of the earth. Is this clear concept of center of gravity? Can I erase this? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Erase कर दो अभी मैं. Can I erase it? Yes, sir. Okay, students. Now the last question, and then we'll go for number of particles. Okay, students. Are COM and CG same now? The center of mass and center of gravity is same.
स्टूडेंट्स, is center of mass and center of gravity same? Center of mass are a point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. Center of gravity is a point where the entire weight of a body is supposed to be concentrated. Sir, center of mass can lie inside, can lie outside the matter. So center of gravity also can lie inside, can lie outside the matter. So center of mass can be considered to be for a heavier mass. It's the point will be towards a heavier mass. जैसे आपने बता दिया R1 by R2, M2 by M1 का रेशियो लेते हुए, अगर R1 इक्वल टू R2 है तो दोनों का मास सेम होना चाहिए. आपने 3 कंडीशंस यहाँ पे दिए थे रेडिंग पे लिखे हुए. तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है ना सर, मास के ऊपर डिपेंड होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट होगा. The simple example, students, center of gravity का एक simple example, students. Does it shift towards a heavier mass? Yes. So center of gravity is a point which lies, लेकिन the direction of center of gravity towards the center of the earth will shift. Center of gravity shift क्यों होता है? Direction we can consider. It is going further ahead. Now, if I happen to put forward, is COM and CG are one and the same? तो तुम क्या बोलोगे? Just do keep this in mind. For point mass objects, COM and CG are concurrent. ये ध्यान में रखना. Point mass objects. तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में, यानी हमारे हिसाब से स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे सामने बैठा होगा तो 110% सोचेगा सर वो एक ही चीज है, वो अलग है ही नहीं. तो दो अलग नाम क्यों दिए हुए? स्टूडेंट्स कुछ रीजन होगा ना दो अलग नाम देने का. अगर वो दोनों एक ही होते तो दो अलग नाम नहीं देते. तो ये जो दो नाम सेम कभी होगा फॉर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स. और जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं या हम इलस्ट्रेशंस देते हैं या एग्जांपल्स देते हैं या तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने देते हैं स्टूडेंट्स, उस टाइम पे हम वो ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करते हैं? पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, जिसका साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अदर. अभी फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग ने बैंकिंग ऑफ रोड्स का डेरिवेशन किया था स्टूडेंट्स, तो मुझे फोर्सेस चाहिए थे. तो मैंने क्या किया है, ये पूरा रोड सरफेस को मैंने एक हेवियर मास बता दिया, मैंने कार को क्या बता दिया, एक पॉइंट मास बता दिया. फ्रेंड्स, अगर मैंने कार को एक पॉइंट मास बता दिया तो उसका सीजी और सीओएम एक ही पॉइंट होगा ना, अलग थोड़ी होगा. द एंटायर मास ऑफ द इज कनेक्टेड इज कंसीडर्ड द सेंटर. जब भी हम कोनिकल पेंडुलम के बारे में हम लोग ने जब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताया था, तो कहाँ से तुम्हारा फोर्सेस किस तरफ एक्ट हो रहा था? तो तुम बोलोगे सर ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला था. स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें याद हो तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला देते समय फिर मैंने बोला फोर्सेस किस तरफ जा रहा है? सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर की तरफ जाएगा तो वो टेंशन हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा था टुवर्ड्स डायरेक्टेड, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया. अगर मैं ये पेंडुलम को कंपेयर करूं अर्थ के हिसाब से, हेलो, अर्थ के हिसाब से, तो अर्थ तो एक तो ह्यूज मास है, पेंडुलम इज अ वेरी स्मॉल मास, इतना सा मास है. अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम. तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पेंडुलम तो मेरा पॉइंट मास हो जाएगा. तो अगर पॉइंट मास होगा तो सीजी और सीओएम दोनों क्या होगा? कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मतलब दे वन एंड द सेम. जब भी हम पॉइंट मास लेते हैं ना तो सीओएम एंड सीजी आर ऑल कॉन्करेंट, क्योंकि पॉइंट मास सिस्टम का मतलब क्या हुआ मालूम है? वी आर ट्राइंग टू कंपेयर ईच एंड एवरी मास विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. ये हमेशा है. So now if I happen to go for earth as a huge mass, अगर मैंने इसको अर्थ एज ह्यूज मास मैंने ले लिया है, कैपिटल एम, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर, तो ये क्या बन गया मेरा? पॉइंट मास. तो उसका सीजी और सीएम कॉन्करेंट है. लेकिन अगर मैंने अर्थ के ऊपर, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैंने अर्थ के ऊपर जिसका मास कैपिटल एम है 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स,
और ये उसका सेंटर है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स इसी के, और ये रेडियस कितना है उसका, रेडियस इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। और मैं ये वापस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसी का रिलेशन तुम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स वेट एट अ सर्टेन लैटिट्यूड या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट सर्टेन लैटिट्यूड फॉर्मूला याद है, g at a certain latitude is equal to g minus r omega square cos square lambda। ये मैंने बताया था, इसका डेरिवेशन भी मैंने किया है, सर्कुलर मोशन में किया है। ये फॉर्मूला जब मैंने लिखा तो बोला कि ये तुम ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर ये फॉर्मूला दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट बैक। लैम्बडा का मतलब है सर्टेन लैटिट्यूड। हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो अर्थ है उसका मास कैपिटल एम है, रेडियस ये है। सपोज अगर मैंने, ध्यान से सुना, अगर मैंने अर्थ के ऊपर एक एक पिलर कंस्ट्रक्ट कर दिया, आई गेट इट, जिसकी हाइट 6400 किलोमीटर है, तो मुझे बताओ क्या ये पिलर इन कंपैरिजन इज इट अ पॉइंट मास? हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं पिलर कंस्ट्रक्ट करता हूँ अबाउट द अर्थ सरफेस व्हिच इज ऑफ 6400 किलोमीटर्स, तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट अ पॉइंट मास? ये पॉइंट मास नहीं है। अभी कंपैरिजन शुरू हो गया स्टूडेंट्स, अभी दोनों कंपैरेबल है। जब तक पॉइंट मास था तब तक तुम्हारा COM एंड CG कॉन्करेंट होगा। हमने आज तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं, और ऐसे वी डोंट कंसीडर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। हम जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं सारे पॉइंट मास के हिसाब से करते हैं, कंपैरिजन टू अर्थ। शायद तुम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में भी कनेक्टेड बॉडीज देखा होगा, वेज के प्रॉब्लम्स किए होंगे, तो वहां पे कैपिटल एम दिया होगा, एक छोटा सा एम दिया होगा, उसको भी पॉइंट मास पकड़ा होगा तुम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट मास नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होगा। अगर मैंने रेक्टेंगुलर पिलर दिया है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल है। लेकिन स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि द वेट इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड डाउनवर्ड्स एंड इट इज मोर टुवर्ड्स द हेवियर मास। Since center of gravity slightly shifts towards the heavier mass, always shifts towards the heavier mass, यानी CG is lowered। यहाँ पे CG क्या होगा, CG is lowered। ये वो वाला एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट्स, ये वो वाला एग्जाम्पल हुआ। सपोज अगर मैंने तुम्हें दो कार दी है, दो कार के बीच में कंपैरिजन है। एक मैंने दिया है वैगनार, और ये मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन के टाइम पे, और एक मैंने दिया है स्विफ्ट। ये पीछे का पोर्शन है स्टूडेंट्स, साइडवेज नहीं है, पीछे से तुम देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो। तो स्टूडेंट्स वैगनार टॉल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ होगा। स्विफ्ट थोड़ा सा लोअर है, नीचे की तरफ है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा। कौन सा कार ज्यादा इक्विलिब्रियम में रह सकता है, स्टेबिलिटी में रहेगा? स्विफ्ट। यानी अगर सपोज ये कार को तुमने सर्कुलर मोशन में मूव किया, या ये कार को तुमने सर्कुलर मोशन में मूव किया, ये दोनों के टायर्स है स्टूडेंट्स, अगर हाई स्पीड पे, दोनों का स्पीड लिमिट 100 है स्टूडेंट्स, दोनों का लेन्स का स्पीड लिमिट 100 है, 100 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड लिमिट। लेकिन अगर तुमने इसको 110 से मूव करना शुरू कर दिया, इसको 110 से मूव करना शुरू करेगा, which car will have a possibility to topple this one and not this? क्योंकि एट हाई स्पीड यहाँ का रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है, यहाँ का रिएक्शन फोर्स, यानी इनर टायर्स का रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगा। So the line joining the center of gravity and the center of falls outside the wheels, और ये topple होगा, ये topple नहीं होगा, यानी ये topple होगा और ये topple नहीं होगा। That's how people go for lower base cars. Have you seen the Formula One race cars? Students, Formula One races देखा है? Laps कितने cover करते हैं वो? तो cars देखे कैसे होती है cars? Broad tires, पूरा flat, ground के साथ में connected। जब वो बंदा ड्राइवर अंदर बैठा है तो देखा करके ड्राइवर कितना अंदर जाके बैठता है वो। And if you see the base of that particular car is hardly 15 centimeters away from the road surface, 15 सेंटीमीटर, एक से एक का डिस्टेंस पे है बस, and it goes with very high speed. So students, center of gravity always shift towards the heavier mass we consider. अगर मैं माउंट एवरेस्ट कर दूं तो माउंट एवरेस्ट भी क्या है, it's huge,
one we consider. तो उसका center of mass will be geometrical center, but center of gravity will be slightly shifting towards where? Towards heavier mass. तो अगर किसी ने पूछा students, is CG and COM are concurrent? Is CG and COM are concurrent? तो तुम्हारा आंसर होगा yes. लेकिन किसके लिए? Point masses के लिए. और जो भी हम डे टू डे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो उसके लिए we always consider point masses. Can I erase this part, students? Students, can I erase it? Now, students, you have position of center of mass for number of particles, okay? Students, I gave you the formula for system of two particles, okay? COM for system of two particles, okay? I've given this relation very clearly, students. Getting it? इसका मैंने दे दिया है तुम्हें. And what exactly R is inversely proportional to N. Okay, position of that particular particle is inversely proportional to N we consider. Okay, and the relation what we plotted is, अगर मैं एक simple diagram के हिसाब से दूँ तो ये है M1, ये है M2, दोनों के बीच में मैंने distance दे दी है T. Getting it? Let us say the center of mass is somewhere over here. इसका R1 में लेता हूँ और इसका मैं R2 लेता हूँ, students. Inversely proportional to the what's the formula I'm getting it, students? The formula which I'm getting it will be R1 will be equal to what, students? It will be M2 into D upon M1 plus M2, and R2 will be equal to M1 into D upon M1 plus M2. ये formula पहले है इसके लिए. Okay, second now. This is for a system of two particles, students. Is that clear? So now when I speak about for the system of two particles, students, ये for system of n number of particles. Okay, so we are going to go for position of center of mass of large number of particles. तो उसका relation कैसे आएगा? तो large number of particles के लिए students you have to go for the coordinates. यानी I'm going for x, y, z plane. यानी I, J, K, 0, 0, 0. ना suppose अगर मैंने कुछ particles दिया है, okay, n number of particles. यहाँ पे मैंने दिया है M1, यहाँ पे मैंने दिया है M2, यहाँ पे मैंने दिया है M3, यहाँ पे मैंने दिया है Mn, different in a space. What is the distance of M1 from the point of intersection of the axis? So it will be R1, इसका R2, इसका R3, इसका Rn. अगर मुझे इन सबका सेंटर ऑफ मास निकालना है, स्टूडेंट्स देखो ना, सेंटर ऑफ मास यानी कि दो पार्टिकल्स है नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इनका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं क्या लिखूंगा? RCOM. यानी रिजल्टेंट वेक्टर, स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मैं कैसे लिखूंगा? सर सम ऑफ ईच, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है. हाउ इज R and M इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो अगर मैं पहले पार्ट के लिए लूंगा तो कैसे? दिस विल बी M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस ब्ला 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 प्लस Mn Rn upon what? Summation of all the masses we consider, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn. यानी अगर मुझे सेंटर ऑफ मास इसका चाहिए फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो व्हाट एग्जैक्टली ये क्या होगा? सर अलजेब्रिक सम में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या मासेस मैंने कंटिन्यूस में रखा है, चिपका के रखा है मैंने मासेस को? नहीं, सारे स्कैटर्ड है.
यानी है तुम्हारे ज्यादा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, लेकिन दे आर इन डिस्क्रीट मैनर। अगर डिस्क्रीट मैनर में होगा तो ये समेशन कैसे लिखोगे तुम, इंटीग्रेशन में लिखोगे या ट्राई टू गो फॉर अलजेब्रिक सम? सर अलजेब्रिक सम लेता है, तो अलजेब्रिक सम में कैसे लिखोगे सर, मास सबका अलग है तो इट्स m1, सर पोजीशन वेक्टर भी अलग है यानी mi आ रहा आएगा, where I equal to the first particle, तो I equal to n particle upon डिनोमिनेटर क्या है सर, सबके अलग अलग मास है, तो algebraic sum of mi, I equal to 1 to I equal to n. This is what we consider this. What exactly is Ri, students? What exactly is Ri? ये Ri क्या है sir? Ri is the resultant vector. Students, it's a resultant vector. अगर ध्यान से देखें students, अगर मैं एक पार्टिकल को लेता हूँ students, ध्यान से देखो, let me take in this manner, 0 is it. अगर मैंने m1 को लिया है students, तो मुझे बताओ ये जो पोजीशन वेक्टर r1 है वो है क्या एक्चुअली? बोले सर r1 is actually xi cap y j cap z k cap आया ना, इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, वो पोजीशन वेक्टर दिखाएगा। शुरू कुछ समझ में आ रहा है? यानी अगर मुझे r1 दिखाना है स्टूडेंट्स, तो r1 बार है क्या? व्हाट इज r1 बार? सर r1 बार इज x1 प्लस y1 प्लस z1 वी कंसीडर। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो तुमने क्या किया था वेक्टर्स में? सो द लॉन्गेस्ट रॉड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में और ये मैग्नीट्यूड में आ गया। स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. So now अगर suppose if I happen to write down what exactly ri, ये ri को अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ये एक पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे ith पार्टिकल के लिए तुम कैसे दिखाओगे? स्टूडेंट सर तो बोलोगे सर ith पार्टिकल के आपने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना ri, तो ri को मैं कैसे दिखाऊंगा? सर ri को मैं दिखाऊंगा xi y j, I getting it? Let me to go for ith particle only. Sorry, this is I ना, let me put it in terms of क्योंकि I particle है ना, तो xi yi we consider and zi we consider for ith particle, we can consider, that's how we can consider. यदि लेकिन ये किसके लिए है? x y और z तीनों के लिए है ये students. So this is actually the center of mass, center of mass for all the particles along x axis, all the particles along y axis, all the particles along z axis. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? I can also write down as xcom I cap plus ycom g cap plus zcom k cap I can write down, और वो क्या बन जाएगा तुम्हारा RCOM। यानी अगर मुझे RCOM लिखना है तो इट्स सिंपली व्हाट, summation of XCOM plus YCOM plus ZCOM. Is this clear to all of you? This is for only one particle, I particle. This is for the entire. Now, if somebody asks me, sir, what exactly XCOM, YCOM and ZCOM? तो XCOM के अंदर क्या होगा? So सारे particles along x axis को लेना है। तो XCOM का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा? सर सिंपल XCOM का फॉर्मूला क्या होगा? What is XCOM? यही आएगा तुम्हारा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे R1 R2 R3 आएगा या it will be MI आएगा। Algebraic sum I equal to 1, I equal to n, the whole upon capital M. इसको मैंने capital M ले लिया। Can I get the answer for YCOM? Why not? Center of mass along y axis. इसको तुम कैसे लिखोगे? Algebraic sum of MI YI, where I equal to 1, I equal to n, the whole upon M. What is center of mass with respect to z axis? So algebraic sum of MI ZI, where I equal to 1, I equal to n, the whole upon n. Yani if I want to go for ith particle Ri, then it will be xi, yi, zi.
If I want to go for XUM, it will be particles only along x-axis, particles only along y-axis, particle only along z-axis. If I happen to go for sum of all of them, then that becomes a position vector for all the particles we consider. That is RCUM. क्या ये clear हुआ students सबको? Center of mass for large number of particles. Each particle is at a distance R1, R2, R3, so on. The total center of mass of the system can be written in terms of MI upon MI. Ri is the summation of position vectors of all the particles we consider. Can be written in terms of xi, yi, and zi. Can I run RCM along x, y, and z? Why not? Friends, is it clear? Yes, sir. Can I agree? Yes, sir. Now, friends, suppose if I happen to give you a question, since I'm giving you 3 particles. Now, this is a kind of a problem, students. Okay, there are 3 particles given to you, students. M1 is given to you as 1 kilogram. M2 is given to you as 2 kilogram. And M3 is given to you as 3 kilogram. Okay, the question asks students, find out the position of center of mass for the system of 3 particles. Okay, their corresponding position vectors R1, R2, and R3 are given us. Okay, so the position vector is given to you as I plus 4j plus k in meter. I plus j plus k in meter. And for the third particle, it's given to you as 2I minus j minus 2k in meter. Students, hope you got it. मैंने 3 particles दिए M1, M2, M3 in a given space, students, और उनका सबका position vector दिया. यानी ये सोचो कि मैंने 3 vectors दिए, students, ये I, J, K. शायद M1 यहाँ पे है, M2 यहाँ पे है, M3 यहाँ पे है, ये R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये R3 दिया है. यानी उसका मतलब स्टूडेंट्स, उसका मतलब ये जो M1 था उसका डिस्टेंस मैंने x एक्सिस से y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, z एक्सिस से कितनी दूरी पे है. I have tried to consider that rectangular plane, all perpendicular distance मैंने लिया. तो नाउ ये तीनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है, पोजीशन वेक्टर ना, मुझे I want to find out the position of center of mass. प्लीज अभी ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली. यानी ये एक रेक्टेंगुलर स्पेस है, उसका मतलब ये सोचो कि ये एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है. स्टूडेंट्स, ये 3 मासेस है. तो तुम बोलोगे सर शायद इन दोनों का मास का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे हो सकता है, क्यों नहीं? इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सर कहाँ पे यहाँ पे हो सकता है, क्यों नहीं? इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे ये हो सकता है, यस हो सकता है ना, क्यों नहीं? यानी ये तीनों का जो रिजल्टेंट मुझे सेंटर ऑफ मास है वो पूछा गया, यानी मुझे पूछा गया है RCOM. समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा गया. As if I have given you, think in this manner, I've given you 3 masses. Students, तुम्हारा ये घर है, everybody listen carefully, this is what your home is. Agreed? और सीलिंग से मैंने 3 masses को सस्पेंड किया है. Getting it? या एक मास को मैंने ऐसे रखा है, दूसरे मास को मैंने ऐसे रखा है. चलो,
एक को ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा है, एक वर्टिकल रखा है, ऐसे तीनों मासेस को रखा है और मैंने पूछा इनका तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालो पोजीशन, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने आप को एक कॉर्नर में खड़ा करोगे ना और वहां से तुम डिफाइन करोगे ना। तो ये रेक्टेंगुलर स्पेस हो गया, ये M1 हुआ, ये M2 हुआ, ये M3 हुआ। शायद इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कभी यहाँ पे होगा, इन दोनों का रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पूछा गया तो तुम हाथ ऐसे दिखाओगे कि तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास, वो मैंने पूछा गया है और जो फॉर्मूला मैंने दिया था वो उसका दिया। Hope now the question is clear and such kind of problems are clear to you. So I've given you 3 masses, position vectors of each given to you. Find out the position of center of mass for the given system. तो जब भी कैपिटल आर पूछा ना स्टूडेंट्स, कैपिटल आर, तो किसके लिए चला जाता है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स साथ में। Let me answer this. Yes, Swapnil, can you answer? Swapnil, Shubh, Priya, Purvi, Nishant, Mayur, Mayank, Jason, Alicia, Ashmita. Yes, anyone? I'll see you when. Is your K cap proper? Ashmita, it seems your K cap is not proper. No, it's correct. Students, just give it the answer. Yes, Ashmita, can you tell me how to go about? What's the formula? Yes, sir. So M1 into R1 plus M2 into R2 plus M3 into R3. M1 R1 with a bar. Students, अभी देखो ये RCM with a vector मैंने बता दिया, तो वेक्टर नोटेशन में ही आएगा, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में आएगा। प्लस M2 R2 प्लस how many particles are there? Only M3 are there are not n number. और यहाँ पे क्या होगा, summation of all the masses. Agreed? Yes, sir. Okay. Now when you put R1 R2, Nishant is also answered. Now if I happen to go for R1 R2 and R3 को अगर तुम substitute करोगे तो बात से मिल जाएगा। M1 क्या स्टूडेंट्स 1 into bracket R1 कितना दिया I plus 4j plus k। स्टूडेंट्स ये देखो मैंने यूनिट वेक्टर में लिखा है, ये तुम्हारा वेक्टर है स्टूडेंट्स। वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, a unit vector is a ratio of vector to its magnitude. तो वेक्टर is actually what, magnitude into unit vector। तो ये R1 बार ये वेक्टर है, एवरीबॉडी ध्यान से देखो ये वेक्टर है ना, and that vector is equal to what, its magnitude into unit vector we can consider. So 1, 4 and 1 other magnitude I-J K other unit vectors, for all the three we consider. So do take care when you're solving such kind of questions, students. Plus M2 क्या होगा, M2 is given to us how much, 2, how much is R2 given to us, I plus J plus K. How much is M3 given to us, 3, in bracket what is R3, 2y minus J minus 2K.
upon summation of all the masses we consider. So what exactly it will be? 1 plus 2 plus 3. So what exactly your final answer will be, students? Your final answer will be 3 by 2i plus 1 by 2j minus k by 2. And that's your RCOM. Is it still in vector form? Yes. Students, ये है magnitude और ये है unit vector. So this is minus half k. Agreed? Yes, sir. Okay, just try to solve for this one, the next one, students. Now, students, I'm giving you 4 particles. The answers are, students, I'm giving you 4 particles, and these are at 4 corners. 4 particles I'm giving it to you, students. Okay. 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, and 4 kilogram. So there are 4 particles I'm giving it. Okay. Let me take this as M1, M2, M3, M4. And so these are 4 particles are placed at 4 corners of a square. I get it? 4 particles, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilograms are at 4 corners of a square. Side is 1 meter, students. Side is 1 meter. Now this is 1 kilogram. This is 2 kilogram. This is 3 kilogram. And this is 4 kilogram. Are placed at 4 corners of a square. So I want you to find out the position. The answer to the question क्या position of center of mass for the given system. Find out position of center of mass for the given system. Side of the square is 1 meter. Is the question clear, students, all of you? Position of center of mass for the given system. Absolutely correct. Shrij Nishant has given the answer. Absolutely correct. Anybody else? It seems Smith Bhagya lecture miss. Next time I'll see to it he's not there into the lectures. Very good, Nishant. Anybody else? Come on, man. Mayur, Swapnil, Ashmita, Purvi. Ria. Okay, Nishant, can you tell me how to go about? Yes, sir. Bolo.
So first, there are particles in four corners. So I just took the coordinates starting from the origin. So let's take M4 as 0, 0, M3 1, 0, M2 1, 1, and M1 0, 1. I plotted in a graph. Okay, now listen, wait a minute, निशान. Students, देखो इसने प्रॉब्लम को कैसे इजी बना दिया. जब भी मैंने ये वाले पार्टिकल्स दिए थे तो तुमने देखा नहीं मैंने क्या किया था. ये तो स्पेस में था ना. देखो ना, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए स्टूडेंट्स. ये तो स्पेस में हो गया, एक्स वाई जेड में है. और जब भी यहाँ पे मैंने 1 2 दिया और साइड 1 दिया है स्टूडेंट्स, यानी सबका एक ही वेक्टर दिया है, एक ही पोजीशन में दिया है. तो कैन आई सी दैट दीज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन अ गिवन प्लेन. यानी फॉर एग्जांपल वॉल के ऊपर तुमने 4 मासेस को लगा दिया है. और दूसरी बात, निशान ने क्या किया है, उसको एक प्लेन में ले लिया है और सबसे हेवियर मास को ओरिजिन पे रख दिया, यानी कैलकुलेशंस और इजी हो गया. अगर तुम 4 किलोग्राम, देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम 4 किलोग्राम को यहाँ पे रखोगे 3 किलोग्राम, तो भी तुम्हारा आंसर आएगा. I get it. You will get an answer in that case. But in that case, what exactly we consider, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. और looking at the center of mass, अभी तुम लोकेट करो स्टूडेंट्स, अगर मैंने 1 2 3 4 लिया है तो स्टूडेंट्स तुम्हारा सेंटर ऑफ मास प्रिसाइसली कहाँ पे होगा. तो तुम बोलोगे सर 1 और 2 दोनों मिलाकर 3 है, 4 and 3 7 है. स्टूडेंट्स यहाँ पे हेवीनेस ज्यादा है, यहाँ पे हेवीनेस कम है, तो सेंटर ऑफ मास इससे नीचे की तरफ होगा. 2 + 3 कितना होगा, 5. 1 + 4 is 5, है ना. यानी ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा मिड पॉइंट में होगा, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ होगा. आर यू गेटिंग इट. यानी ये हाफ के सेंट में तो होगा, यानी कहाँ पे मुझे 0.5 तो आएगा, लेकिन क्लोजर टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ इट. यानी मेरा y कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना, ये देखो ये 2 3 5 है, 2 3 5 है. आई गेटिंग इट. तो अगर मैं ये वर्टिकल लाइन करूं तो यहाँ पे 5 किलोग्राम, यहाँ पे 5 किलोग्राम, तो मेरा सेंटर ऑफ मास समवेयर ओवर हियर हो सकता है, क्यों नहीं. लेकिन अगर मैं 1 2 3 किलोग्राम ऊपर की तरफ लेता हूँ, 4 + 3 7, तो मेरा सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, क्यों नहीं. इट कैन शिफ्ट इन दैट केस. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स. नाउ just simply find out your RCOM. How do you find out RCOM? RCOM will be equal to what? So center of mass with respect to x-axis, comma YCOM चाहिए मुझे, यानी मुझे x, y चाहिए, बस. Yes, Nishan, can you tell me what exactly it is? इसके coordinates क्या है, 0, 0 है ना. तो अगर मैं इसको M1 लिया है स्टूडेंट्स, आई गेटिंग इट, तो इसके coordinates में लेता हूँ स्टूडेंट्स 0, 1. तो ये क्या होगा, x1 y1. ये M2 ले रहा हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दिस इज 1, 1, दिस इज x2 y2. ये M3 इज इक्वल टू 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज 1, 0, so this is x3 y3. and last one, what exactly it will be, so it will be 0, 0, so it will be x4 y4. now what exactly xum का फॉर्मूला क्या होगा, what will be, sir it's m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4. तो फॉर्मूला मैंने दे दिया था एक्सियम के लिए, डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 plus m4. अगर मैं ये वेक्टर डालता हूँ तो ये भी वेक्टर में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तभी जाके निशान ने आई और जे में आंसर दिया. अगर मैं वेक्टर नहीं लिखूंगा तो मेरा आई जे नहीं आएगा. तो देखो सब्स्टिट्यूट करो, m1 की वैल्यू क्या है 1, व्हाट इज x1 0, तो ये पहला केस क्या होगा, चलिए 1 × 0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस m2 × x2 यानी 2 आ जाएगा, प्लस m3 × x3, सर ये 3 हो जाएगा, प्लस m4 × x4 से ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, m1 + m2 + m3 + m4, 1 + 2 3 + 3 6, 6 + 4 10. What is my answer? 0.5. So what is my XCOM? 0.5 मीटर. वैसे ही तुम्हें YCOM क्या मिलेगा, 0.3. अगर मैं वेक्टर में लिखता हूँ तो ये J कैप आएगा, ये I कैप आएगा, मीटर में और मीटर में. I can consider that because this is 1 meter. So what are the coordinates, students? What is my XCOM, YCOM? 0.5, 0.3.
And देखो, this is what if I happen to consider my HCM is 0.5, my Y is 0.3. And ये 0.5 आएगा और ये 0.3 यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन दिस लाइन ओनली, यानी 0.5 के ऊपर ही होगा, लेकिन नीचे का मास है तो शिफ्ट नीचे की तरफ हो जाएगा, तो 0.3 पे आ गया y कोऑर्डिनेट्स। So students, you can estimate, you can just try to judge it कि मेरा आंसर वैसे आना चाहिए। Students, is this clear to all of you all? Yes, sir. So the final answer should be in magnitude or Okay. average. That depends on the options given to you. अगर options में I और J मिलेगा तो 0.5 I and 0.3 J we consider in that case. Coordinates मिलेगा तो 0.5, 0.3 x, y 0.5 meter, 0.3 meter. Because I and J are unit vector. Now what is the magnitude of unit vector? 1. Agreed? Yes, sir. So the position vector will be shown from origin. यहाँ से तुम दिखाओगे position vector. तो तुम्हारा RCOM क्या है? 0.5, 0.3. You are trying to show the position. Where is the center of masses? Okay, students. Next lecture will be continuing further, students. Okay, so kindly revise the formulas, and we'll be going with some more questions in the next lecture, students. Okay. So we'll wind up the sessions right now. Thank you, sir. Most welcome. Bye. Bye.